અમદાવાદમાં પત્ની અને સાસુને જીવતા સળગાવવામાં આવ્યા હોવાની ઘટના સામે આવી છે। જમાઈ પર પત્ની અને સાસુને જીવતા સળગાવવાનો આરોપ। જીવતા સળગાવતા પત્ની જયાબેન રાજપૂતનું મોત। સાસુ ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ। પત્ની સાસુને સળગાવવા જતા પતિ પણ દાઝ્યો। પોલીસે આરોપી પતિ અશોક રાજપૂતને કસ્ટડીમાં લીધો છે। મૃતક અને આરોપીના 5 માસ પહેલા જ લગ્ન થયા હતા। બંને વચ્ચે દાંપત્ય જીવનમાં ડખા ચાલતા હતા। મૃતક જયાબેન સાથે આરોપી અશોક રાજપૂત ઝઘડો કરતો હતો। અગાઉ મૃતકે આરોપી વિરુદ્ધ નોંધાવી હતી પોલીસ ફરિયાદ। મુસ્કાન બ્યુટી પાર્લર નામની દુકાનમાં પતિએ પત્ની અને સાસુને सळगाव्या। मैं तो अपने दुकान पे ये काम कर रहा था, फिर चिल्लाने की आवाज़ आई तो जो जया बहन है ना वो आगे आ गई तो वो जल रही थी, तो वो पानी था वो यहाँ से उठा के उसके ऊपर डाल दिया तो उसकी आग बुझ गई, वो आगे चली गई। उसकी माँ जो थी वो यहाँ पर आके गिर गई, तो सामने वाले सब दुकान है ना वो पानी लेके उसकी माँ के ऊपर डाल दिया। फिर उसकी आग बुझ गई, कपड़े जल गए थे उसके और कुछ चादर बादर लाके उसके ऊपर डाल दिया। गई काले तकरीबन सांजे 7 वाग्यानी आजूबाजू एक पतिए पोतानी पत्नीने अने सासने कुछ ज्वलनशील पदार्थ नाखीने सळगावी दीधी अने जानथी मारवानी कोशिश करी छे। ए बंने विक्टिम्सने तुरंत सारवार हेठल मोकल्या अने जे आरोपी छे एने पण थोड़ुंक बर्न इंजरीज थई छे, तो ए पण सारवार हेठल छे अने पुलिसनी कस्टडीमां छे अने पुलिस फरियाद नोंधीने आगळनी तपासनी कार्यवाही चालू करी दीधी छे। आ थोड़ा समय पहला ज बंनेना लग्न थया हता अने बंने वच्चे थोड़ुंक घरकंकास चालतुं हतुं अने तकरीबन 1 मासथी ए अलग रहता हता। जे पत्नी छे पोताना पतिथी अलग रहती हती, तो एना कारणे ज ए थयुं छे एवुं प्राथमिक दृष्टिए जणाई आवे छे। तेम छतां तपासमां अमे ચોક્કસ શું કારણ હતું એનું પતા લગાવી લઈશું।